में दो विद्वान यहाँ पधारे हैं। इस सत्र में दास बेनहूर जी अध्यक्षता कर रहे हैं और कोंकणी से दिलीप बोरकर जी हमारे साथ हैं। मैं अपने अतिथियों को बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दिलीप बोरकर जी और दास बेनहूर जी। साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय दास बेनहूर जी और दिलीप बोरकर जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही संक्षेप में मैं रचनाकारों का आपसे परिचय करवा देता हूं। दास बेनहूर जी प्रख्यात ओडिया लेखक जितेंद्र नारायण दास जी का उपनाम है। आपकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। क्यों इतना आप लोग बोल रहे हैं? प्लीज। आप प्रख्यात ओडिया लेखक जितेंद्र नारायण दास जी का उपनाम है। आपकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कहानियां, कविता, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत और फीचर्स शामिल हैं। आपकी रचनाएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आपकी कई कृतियों का अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला में अनुवाद किया गया है। आप साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कई अलंकरणों से विभूषित हैं। हम आदरणीय दास बेनहूर जी का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दिलीप बोरकर जी प्रख्यात कोंकणी कथाकार, नाटककार, बाल साहित्यकार, निबंधकार, निर्देशक और निर्माता हैं। आपने हिंदी और कोंकणी दोनों भाषाओं में स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की हैं तथा आपको कोंकणी के अलावा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान है। आप टेलीविज़न कलाकार तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। आपकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं: एक अखबार डायरी, सुखी वसुंधरा, सखी वसुंधरा, गोमाचल ते हिमाचल, पिंटूची कल भोदनवद्दी, भारते भार आदि आपकी कृतियां। आपको कला अकादमी पुरस्कार, पत्रकारिता और साहित्यिक पुरस्कार, डॉक्टर टी.एस. पाई फाउंडेशन पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी का मुख्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हम आदरणीय दिलीप बोरकर जी का भी अकादमी की ओर से बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि इस सत्र में दो हमारे वक्ता हैं और ये सत्र 1 घंटे का है, तो आप जितनी देर बोलना चाहें, आपके पास समय है। और आपके सामने हमारे सम्मानित श्रोता हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब इस सत्र को अपने हिसाब से आप चाहें तो आपस में संवाद करते हुए भी इस सत्र को चला सकते हैं, या अगर आप चाहें तो विधिवत वक्तव्य देते हुए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से हूँ। दिलीप जी यहाँ पधारे हैं। मेरा मानना है मैं जो जगन्नाथ शब्द उच्चारण किया यहाँ वो अपने आप में इंडियन लिटरेचर है। We say that India is a symbol of unity in diversity. We worship a Lord, and He is Lord Jagannath. He is also a unity in diversity. You know, in India we have many faiths: Hinduism, Buddhism, and Hinduism is divided into different other faiths, like say Shaivism, Shaktism, even Ganapatya is another kind of faith. There are so many kinds of faith, and people think Lord Jagannath is Buddha himself, Mahavir himself, Mahakala himself. So the many things are appropriated into one concept, that is Jagannath. Here when we are going to talk about diversity in children's literature, and you will also analyze how it is being represented in children's literature, automatically the concept of
India comes to my mind. Just half an hour back, I was there in another session. The discussion was on translation. They were lamenting that translation is being neglected. Translation is necessary for national integration, for communication among the people. But here we are discussing about children's literature, and I think it is more important than the concept of adult literature. You know, literature it does have two forms, the written form and the spoken form. In India, because of the climate, there is more of spoken literature than of written literature. And in that spoken literature or oral literature, there is more of children's literature than of adult literature. When we say folk literature, and I will justify that. Before I go into that, since we have time, we can go on elaborating a little more. You know, India has 22 official languages, 11 classical languages chosen out of those 22. And Sahitya Academy has recognized 24 languages in which it is distributing prizes. Along with 22, it has added Rajasthani and English. English. And if you go on counting the languages recognized in different provinces, the number will be 122. But if you go on counting the languages one after the other, including the dialects, it will be more than 1,000. And mind you, there might not be adult literature in all the languages, but there is children's literature in all the languages. And children's literature is more represented in its oral form. That is my first contention. Second is, many people say that literature started with Valmiki. He got agitated when he saw somebody, a hunter killing a crane, a croucher. And out of that anguish, and you may say empathy, something he uttered, which is treated to be the first sloka and the first couplet accepted by the critics as the first utterance of literature. My submission is, man was living in the forest like other animals. Because of biological necessity, men and women must have been together. Let us consider the first child born to the primordial mother. When the child is born, it was the responsibility of the mother, because father was not known. The woman was with many men. She even does not know whose child she is carrying. So father concept was not there at the beginning. It is the concept of mother. Mother and child, that is how civilization started growing. One child, another child might be. Then father is chosen, or so not father, husband is chosen. Anybody having power who can protect her or her children. But my point is, when the first child is born and the responsibility of the mother is to keep the child alive. Say, for example, the child must be, it has to be placated.
Mother has the responsibility to placate the child. So while placating the child, she must have uttered a few words. The language was not then known, nothing written. Even language, its form, it was not there, only sound. So the primordial mother used some sounds to placate the agitating child. So it might be la 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 lu la, anything. That is the fast utterance of literature. So to my mind, the lullabies which are nonsensical, they are the primordial form of literature, like the primordial mother. But what happens today? You see, for the last 4 days, Dilipji, we are all eating literature, sleeping literature, dreaming literature. And out of 90 sessions, there is only one session given to children's literature. And we are discussing about children's literature where there is no child present here. But I must say that child or children's literature has more clientele than adult literature. You talk about novels, you talk about epics, you talk about very philosophical writings, essays, stories. But if you talk about children's literature, I think the readership is more, because father will read it, then it will give it, see, here he will give it to the child. Mother will read it, then she will give it to the child. So children's literature is fast. It is written by the adults, number one. Children's literature is also fast read by the adults, then it is given to the children. So that is how the clientele of children's literature is more compared to adult literature. Then another thing is, if any form of literature has suffered to its core, it is again children's literature. Because I was telling you that it is only the adults who write for children. Very few children's writing have gone to the level of literature. I don't know if Sahitya Academy has ever produced, or ever published any book written by a child. Not so far. Now since publication has become very easy, people have started making books, because very recently I was in a DAV school, so children of the age of 8, 12, they have written books, and books are also coming out. My grandson, who is also 7, 8 years old, he has a book. But they are not children's literature. So whatever literature is written now by, anything that circulates as children's literature, it is written by adults. And adults have a bias. And you will be astonished to know, Oxford University started in 12th century. And nowhere till the 1970s, there was a department called children's literature anywhere in the world. It started in Cardiff University, and Peter Funk in England. Peter Funk became the first professor of children's literature, and he developed a concept called childism. Childism means adults' bias towards children, that children should be like this. A child should read these things. A child should eat like this. A child should behave like this. These values are to be imbued in every child. This is an adult speaking about the child. No child decides what is good for him or her. So therefore, children's literature over the ages
is neglected, and people without knowing it have done this. In Odia they used one word, arbachina. It is also a Sanskrit word. Arbachina means it is a very recent thing. But I tell you, as I was telling you, the beginning of literature is children's literature. It is mother's lullaby, that nonsensical thing. That is the first thing which should be recognized as the primordial form of literature. But today, we think that children's literature is not very important. That was the condition then. The most important thing before us is, as I was telling you, there are thousands of languages, dialects, and in all the dialects there must be literature, though they don't have scripts. They are not recorded. Every day, an illiterate mother, she must be creating new lullabies. There are many mothers who, out of their common knowledge, also create verses, sing songs. And in our climate, because we have a hot climate here, we spend time outside the house most of the time. And in the Western world, because they are cold countries, they spend more time inside the house. So you will find more of written literature in the Western societies, and you will find more of oral literature in the Eastern societies because of the climate. And when we say diversity, we confine the concept to language only. We have so many languages, so we must, translation, Professor is there, Mishraji. There is a necessity to bring this concept from this language to this language. Children's literature should also, Konkani children's literature should come also to Odia. Odia literature should go into that. And most of the time we translate into English, and now they are going to Hindi. But the important thing is, literature in its diversity, particularly for children, it is not confined to the diversification of language. It is also related to space, time, geography, morage, ethnicity. Different things are there. Let us say, for example, Panchatantra. Panchatantra was written, I think, 300 BC. Now it is almost translated into most of the languages in the world because it was written in Sanskrit. And whether you accept or not, Sanskrit in many forms is understandable in India and also outside. There was a time when Sanskrit was the link language in the entire India. Now, even today, you have translation of Panchatantra into several languages, several Indian languages. And the relevance is there because the characters are either animals or birds. But when you translate Ramayana, Mahabharata, or Bhagavat, or anything like that, you can't carry the same atmosphere. You will have to carry the values, truth. That somebody, Rama, is obeying the orders of his father, even in his absence. So, diversification of culture continues. And we say that child is the father of man. And if the society is to grow, it must grow on the shoulders of the child. Khalil Gibran said that we are in a borrowed world and this is the world belonging to the children. The adults are there on rent. So children's literature is the future. That is my mind.
And we will have to bring back the oral forms to the written form. They are dissipating day after day. It is not only in Odia literature, in most of the literatures in the entire world, spoken literature is vanishing. Because scholars are giving more importance, more emphasis on the written language. Oral language, anything, any creativity in oral language is not given that importance. Again, coming to India, children's literature is facing now a greater challenge because there is a great divide between urban population, rural population and tribal population. If you write a song or say story for a child for the urban people, urban school-going child, it will not be applicable to someone who is in the rural area. If you are writing something for the rural child, it is not going to be applicable to the tribal child. It's a greater challenge. So because of this divide, children's literature is not really getting unified. You write a song or a story for an adult, it may be understood by the rural man, the urban man, and also the tribal man. But it is not that easy for the child. Furthermore, when you say adult literature, it is one, a monolithic thing. And children's literature is divided into minimum 5 categories. A child born, say for 3, 4, 5, 6 months, she understands or he understands literature. If mother sings a song or there is a kind of toy, color and sound, they are a part of literature. The child understands that. And after 1 year, she starts understanding the words, spoken words. And we use songs for a 1-year child, 2-year child, and once it attains age of 3, the same song will not be good for him, will not be applicable to him. A child of 1 year has the capacity to understand literature, and the child of 3 years is also having the capacity to understand literature, but they are different now. Once, because at 3, he will understand that he is father, she is mother. So you may say, Bapa, Papa, Papa. These things you may create songs for that. Once he attains the age of 5, again the scale is higher. Now the concepts are coming to him. There is a bird, this is cloud, this is storm, this is sun, this is moon. So now the child is becoming again different, and the literature will also be different for a 5-year child. Again 8. Now concepts are coming to him. Values are coming to him at the age of 8. After 8, because if you at that time sing a song that A, B, C, tu kahan gayi thi, mein tokri mein so rahi thi, this will not be applicable for an 8-year child. Now the 8-year child wants adventure. 12-year child wants further adventure. 16-year child wants romance. So the same children's literature will have to be graded. There is nothing called graded literature for adults. Children's literature is graded literature. When we are talking about diversity and representation, we will have to keep all these things in our mind. Now come to these languages. In Hindi, Prabhat, Premchand, Mohan Rakesh, I think Devik Ramesh was there, Prakash Manu, all these people, and Hare Krishna Devsare,
they have written children's literature for Hindi people. But these things, if they go to the other language, the same thing can also be understood. And they have a local tan. Like say in also Bengali, Sukumar Rai started Abol Tabol. Then Upendra Kishore Rai Chaudhary, he wrote a very famous book that is being translated into many languages, Tuntuniro Boy. Then Rabi Tagore, then say Satyajit Ray, Feluda. These stories carried the local flavor. And diversity wants that this local flavor should also go to the other languages. Likewise, you must have also seen the serial Malgudi Days by R.K. Narayan. The stories are written in the background of, say it was written in 1943. So pre-independent situations are there. But all the same, today's children also enjoy that. I remember in 1927, Haradhan Mukhopadhyay, he wrote a book, The Gay Neck, that got a very prestigious prize from America in 1932. That story is about a boy who is training pigeons. And this gay neck was his favorite pigeon. That is also translated into many languages. Many people do not know that. So my point is, a story written in Hindi, stories written in Sanskrit, stories written in Bengali, stories written in Konkani, Odia. I tell you, Gokulananda Mahapatra is one of the very prominent children's writers who wrote scientific fictions. He had a book, Chandrara Mrityu, Death of the Moon. You will be astonished to know, when nothing was known about moon, he wrote that book. So children's literature at this present juncture wants emphasis. If we are not going to give emphasis to children's literature, we are not going to link our children with the present times, our children with the future times. You talk about AI, you talk about unity of India. These adults will create unity. They are diversified themselves. It is only children's literature which will bring the children to the focus. The entire Indian map will be in their mind through the stories, through the poems written in different languages, and those are translated into their own. So my emphasis, Dilipji, would be, if we are talking about diversity and representation in children's literature, the first emphasis should be on translation. How many good translations are there in children's literature? Everybody is interested in that book got no Booker Prize, let us translate. That book got Nobel Prize, let us translate. Adult literature is translated with a focus, but the focus is not necessary. Another aspect is, many people think that children like slim books, 48 pages, 52 pages, 32 pages. J.K. Rowling brought a change in the entire scenario. Her books run into 500 pages, 600 pages, and who read those books? 12-year children, 14-year children. I have seen in the tubes children reading those books. But your mind is, they should be given slim books with big letters, big fonts. There should be pictures only. They can imagine. So my emphasis again is, we must have clear emphasis on children's literature. I am very happy
though it is towards the end and there are very few listeners here, if one is really agitated, somebody like say Gauravhari Das or Rajendra Mishra or like say Vijay Nayak or somebody, or say Babaji Patnaik or Dilipji, to hai hi. Because Krishna was talking to Arjuna, even in Kurukshetra, in the battlefield. Today we are listening to those. There was only one listener, Arjuna. Uddhava. The entire Ekadasa Skandha, it was spoken to Uddhava. Still today we go on. So likewise, if there is a single listener, and he puts emphasis on this, that yes, children's literature is important, and if we are going to create a unified India, if the culture is to be heightened through literature, it is necessary that we should bring children to the focus. And India will remain properly integrated. I say properly integrated because till now, they think, somebody was talking about Nagaland. Even during vacation, they will say, a bank employee was telling me, during the vacation, somebody came and asked him, during the vacation, are you staying in Nagaland or going to India? That as if Nagaland is not there in India. If India is to be integrated, it should be integrated through literature. And if it is to be integrated through literature, it should be through children's literature first. We must attach our children, we should link our children to our future. And you know, we were actually 4. Along with myself, we were 4. And this happens in children's literature, everybody runs away from children's literature. There is only Dilipji. So after me, Dilipji will deliberate on this, and if he allows me again, I will try to summarize his words, and I think we should pick up 1 or 2 questions from the audience. That will be very nice. So now Dilipji, over to you. Please come and give your own opinion. Namaskar. For me, thus have left 20 minutes, but I won't take much time of you. Now, since this was an international festival, I had preferred in English, but now I'm shifting over into Hindi. दोस्तों, आपसे मुझे कुछ बातें करनी है. यहाँ वैसे तो साइजेबल लोग आ चुके हैं. जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा था कोई नहीं रहेगा, लेकिन आप आए हैं और आपके सामने बहुत सारे दास साहब ने कह चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं. लेकिन मैं मेरे गोवा के बारे में, मेरी कोंकणी भाषा के बारे में और जो मैं चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए जो कुछ करता हूँ उसके बारे में आपके साथ ऐसा गपशप लड़ाऊँगा. दोस्तों, मैं गोवा से आया हुआ और आप मुझे पता नहीं है गोवा के बारे में आप कितना जानते हैं. मैं भारतीय नहीं हूँ, आई एम अ पोर्तुगीज सिटीजन. जब गोवा में पोर्तुगीज थे उस समय 1957 में पैदा हुआ था और पोर्तुगीज गोवा छोड़कर चले 1961 में. बाय बर्थ आई एम द सिटीजन ऑफ पोर्तुगीज. जब पोर्तुगीज गोवा में आ गए 450 साल उन्होंने गोवा पर साम्राज्य किया. उस समय हम कोंकणी नहीं बोल सकते थे. इंक्विजिशन नाम का एक प्रकार गोवा में था. जो कोई कोंकणी बोलता है उसे जिंदा जलाते थे. कोंकणी कब लिखे गए, कोंकणी का साहित्य कब पैदा हुआ, कब हुआ, तो 16th सेंचुरी में जब पोर्तुगीज 1510 में आ गए, उसके पहले कृष्णदास श्यामा
नाम के कोई लिखते थे, महाभारत की स्टोरियां लिखते थे, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं है। जब पोर्तुगीज आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो कुछ बोलते हैं समझ में नहीं आते हैं, धर्म प्रसार तो करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले लोगों को पोर्तुगीज आनी चाहिए इसलिए और लैटिन आनी चाहिए, इसलिए कोंकणी का जो लिटरेचर था, साहित्य था, वो बाल साहित्य जो कुछ था वो जला दिया। लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला अगर हम यहाँ की लोकल भाषा अगर नहीं बोल सकते हैं तो हम धर्म प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद जो कुछ मिशनरीज आए थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ की कोंकणी भाषा सीख ले। कोंकणी तो वो सीखते थे किसी मिलकर, लेकिन लिखे कैसे, उन्हें तो देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं आती थी, तो दे स्टार्टेड यूजिंग रोमन स्क्रिप्ट। और उसके बाद उन्होंने कन्वर्शन शुरू कर दिया। कोंकणी तो मर चुकी थी, उन्होंने ये निकाला कि कोंकणी नहीं बोलेंगे। और उसी समय कुछ लोगों ने महाराष्ट्र से कुछ लोगों को लाया, उनकी भाषा मराठी थी, और हमारा कल्चर वो द्रविडियन कल्चर नहीं था, आर्यन कल्चर था। गोवा से अगर साउथ में चले गए तो कर्नाटक से आगे द्रविडियन कल्चर शुरू हो जाता है, और गोवा से यहाँ महाराष्ट्र गुजरात उस बाजू आर्यन कल्चर शुरू हो जाता है। तो कोंकणी जो लैंग्वेज है वो आर्यन कल्चर की थी, वही आर्यन ग्रुप की थी। तो इसीलिए हम मराठी के जो कोई ब्राह्मण लोग आए थे पूजा पाठ करने के लिए, उससे मराठी सीख लगे, और इसी प्रकार गोवा का कोंकणी साहित्य चला गया। और जब 1961 में गोवा मुक्त हुआ तो अब गोवा पर दूसरा प्रॉब्लम आ गया। गोवा का क्या करें अभी? गोवा तो छोटा सा है, उसकी संस्कृति तो मराठी है, भाषा तो मराठी है, लेकिन हम कहते थे हमारी भाषा कोंकणी है, हमारी संस्कृति अलग है, मराठी का समस्या अलग है। फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ओपिनियन पोल दे दिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओपिनियन पोल। आपकी भाषा कौन सी है? आप गोवा में रहना चाहते हैं या महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं? आप डिसाइड कर लीजिए। तो उस समय गोवा के लोग, जब मैं उसमें 10 साल का था, गोवा के जो हमारे लीडर थे उन्होंने कहा नहीं, आपकी संस्कृति कोंकणी है, आप कोंकणी है, अगर आप महाराष्ट्र में चले गए तो महाराष्ट्र का आप एक जिला होगा, एक सिर्फ छोटा सा, और आपका सिर्फ 2 एमएलए होंगे और एक कोई तो खासदार होगा। और हम ओपिनियन पोल जीत गए, और वहां से हमारा स्ट्रगल शुरू हो गया। हमारी भाषा कोंकणी है, और हमारा अगर भाषा का इतिहास अगर आप देख ले, आप लोग आपकी भाषा, आपकी उड़िया हो जो क्लासिकल लैंग्वेज की तरफ जा रही है, कन्नड़ा हो, उर्दू हो, जो कुछ है, लेकिन हमारी भाषा जिसे लोग भाषा ही नहीं कहते थे, वो मराठी की बोली कहते थे। और उस समय साहित्य भी नहीं था, और अगर साहित्य एकेडमी ने कोंकणी एक स्वतंत्र भाषा का अगर निर्णय लेना है तो साहित्य दिखाना चाहिए था, साहित्य नहीं था। लेकिन उस समय 60 साल पहले शनाई गोविंद ब्राह्मण वर्दे रघुनाथ वालावलेकर ने क्या किया? लिखना शुरू कर दिया। उसकी मजाक उड़ाया करते थे, आप क्या शनाई गोविंद है, क्या करेंगे? तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और साहित्य निर्माण किया, और कोंकणी लिटरेचर में बाल साहित्य का निर्माण करना शुरू किया पहले, और वहां से कोंकणी का आरंभ हो गया। और उसके बाद चढ़े गोबाब चले गए, और उसके बाद उनके जो कोई शिष्य थे, रविंद्र केलेकर जी हो और बाकी, उन्होंने कहा नहीं, हम दिखाएंगे कोंकणी भाषा है। और उन्होंने साहित्य एकेडमी से बता दिया कि हमें कोंकणी रिकॉग्नाइज करने एज अ भारतीय लैंग्वेज बोल के, भारतीय भाषा। और 1967 में साहित्य एकेडमी ने कहा कि कोंकणी भाषा है, एक स्वतंत्र भाषा है। और उस समय हमें बाल साहित्य लिखना पड़ता था और तैयारी करते थे, और दूसरी तरफ हमें मराठी वाले लोगों को कहना पड़ता था नहीं, कोंकणी भाषा है। और 60 सालों में आज जो कोंकणी है, आज कोंकणी कंपीट कर रही है उड़िया के साथ, आज कोंकणी कंपीट कर रहे हैं मराठी के साथ, बंगाली के साथ, सब जगह। और आज गोवा में जो लिटरेचर हुआ है, एक दिन में
कम से कम 10 ऑन एवरेज 5 से 6 किताबें पब्लिश होती है सब तरह से। इस प्रकार की स्ट्रगल करके हम आए हैं। मैं कभी कोंकणी पढ़ा नहीं, माँ ने जो कोंकणी में मुझे कुछ बोला था वो था, लेकिन सिर्फ सुनना एक लैंग्वेज की स्टडी नहीं हो सकती है। तो वो उसके लिए मैंने कोंकणी में एमए कर दिया। बाद में मैं पढ़ाता था, उसी समय में कोंकणी में एमए भी कर दिया था। इस प्रकार का हमारा स्ट्रगल है और हमारी भाषा हमें ही बनानी पड़ी और हमें लिखना पड़ा। अभी मैं चिल्ड्रंस लिटरेचर की तरफ आता हूँ। जब आप जानते हैं इमारत, आप बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़े फ्लोर्स बनाते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद अगर ठीक नहीं है वो ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं। और चिल्ड्रंस लिटरेचर जो है वो भाषा साहित्य की बुनियाद है। अगर बुनियाद ही नहीं बची, वही ठीक नहीं हुई, तो हम इमारतें इमले नहीं बना पाते हैं। मैं जब गोवा में लिखने वाले तो बहुत सारे अभी बन चुके हैं, लेकिन गोवा का क्रम और एक अलग है। गोवा के 5 स्क्रिप्ट्स है कोंकणी की भाषा का। एक तो कैथलिक लोग हैं, वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। रोमन स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट वाले नहीं पढ़ते हैं। देवनागरी लिखने वाले रोमन स्क्रिप्ट वाले कैथलिक नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे कोंकणी लोग मोर देन 20 lakhs पीपल आर इन कर्नाटका में है। और मेल्विन रॉड्रिगेज जो आपका सुना होगा अभी, वो गोवा का था जब, लेकिन कन्वर्शन हो गया, धर्मांतरण हो गया, तब वो गोवा छोड़ के उनके पूर्वज चले गए थे, कर्नाटका में गए, कोची गए, यहाँ गए, वहाँ गए। लेकिन वो वहाँ मलयालम, कोची में मलयालम स्क्रिप्ट में लिखते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ लिपि में लिखते हैं। इसी प्रकार हमारी ये कोंकणी भाषा ऐसा अलग अलग स्क्रिप्ट में चली गई। और आज हम जब लिखते हैं तो साहित एकेडमी ने कहा है कि ऑथेंटिक स्क्रिप्ट ऑफ द कोंकणी इज अ देवनागरी। तो अभी वो चला है। अभी हम क्या कर रहे हैं गोवा में, मैं एक पत्रिका चला रहा हूँ बिंब नाम की, 40 पन्ने की 80 पन्ने की जो ये मेरी पत्रिका है, उसमें मैं 20 पन्ने में बच्चों को देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं क्या करता था, मैं कॉलेज में पढ़ा था, उसी प्रकार कुछ कार्यक्रम अरेंज करता था मैं, कार्यक्रम, और बच्चों को जाके वहाँ कहानियाँ सुनाता था और उनको लिखने के लिए प्रवृत्त करता था। और उनको लिखकर वो जो कुछ लिखते हैं वो मैं मेरे बिंब पत्रिका में छपवाता था। आज मैंने पिछले 25 सालों में पहले बार जिस बच्चे ने मेरे बिंब में अपना पहली कहानी लिखी थी, आज उस बच्चे को 20-30 साल के बाद साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। इस प्रकार का हमारा वो काम था। और गोवा में दूसरे ये हमने सोच लिया है कि अब हमने इतना कर दिया है तो हम देखते हैं, हम कहते हैं यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं, यहाँ है। मुझे मालूम है क्योंकि आप हमारा जनरेशन अलग है। जब हम बच्चे थे तो हमारे साथ मोबाइल नहीं था, ऐसा आज प्रकार का जो कुछ है वो कुछ नहीं था, सिर्फ किताबें थी। और हमारे माँ बाप जो कुछ हमें बोलते ये पढ़ो वो पढ़ो, वो हम पढ़ते थे। और उसी के कारण हम ठीक तरह से सोच पाए, सोचने लगे। लेकिन आज क्या होता है, आज पूरा माहौल ही बदल चुका है और हर एक कंपटीशन में दौड़ा रहता है। और कैसा, पहले हमारे घर में क्या हुआ करता था, माँ तो घर में रहा करती थी, हम बच्चों को संभालती थी 6 साल तक, उनको कुछ कहानियां सुनाती थी, क्या क्या करती थी। और उसके लिए हम, और आप सहमत होंगे कि साइंस क्या कहता है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो 80% तक नॉलेज वो जब पेट में होता है तभी उन्हें मिलता है, ऐसा साइंस कहता है। मुझे मालूम नहीं सही है, लेकिन मैंने सुना है, पढ़ा है। और उसके बाद 20% जो नॉलेज जो है वो बाद में पढ़ लेता है, ऐसा कहते हैं। और जब बच्चे, मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती थी, वो अच्छी एक लेखिका थी, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसका अनुभव इतना बड़ा था कि वो हमें कोई, इसलिए आज मैं राइटर क्यों बन पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे बढ़ाया था। लेकिन आज का जनरेशन का क्या होता है, कंपटीशन है। एक पिताजी कमा रहा है वो आज काफी नहीं है, माँ को भी नौकरी करनी पड़ती है। तो माँ क्या करती है,
और माता पिता दोनों बच्चों को किसी केजी स्कूल में डालते हैं, किसी को पालने के, वो बेचारी पैसा मिलते हैं इसलिए क्या संभालेंगे, क्या सिखाओगे? तो उसे तो बाद में स्कूल में, बाद में मोबाइल, इसमें क्या होता है कि बच्चे आज उनका जो सोचने की ताकत है वो बहुत अलग तरीके से है। और इसके बारे में मेरे एज ए राइटर मेरे सामने प्रॉब्लम है। मैं आगे मेरा भारत देखना चाहता हूं, किस प्रकार का भारत। अगर आज के बच्चे सोचकर आगे बढ़ते नहीं, अगर वो आगे बढ़कर एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाते, तो हमारा भारत देश का क्या होगा, अब हमारे समाज का क्या होगा। और अगर हमें अच्छा समाज चाहिए, अच्छी सोच करने वाले लोग चाहिए, तो हमें बाल साहित्य निर्माण करना है। और किस प्रकार का करना है? तो इस प्रकार का होना है। हम उन्हें नहीं बताना चाहते हैं कि तुम अच्छे आदमी बनो, उसमें समझ आनी चाहिए। अगर बच्चों को बताने चले गए आपको इतना ऐसा बनना है, वो नहीं सुनेंगे। तो उनको क्या देना है? शुगर कोटेड पिल देना है। और वो काम हमारा बाल साहित्य कर सकता है। हमको छोटी छोटी कहानी है, छोटी छोटी, उसमें सोचने के लिए मुझे एक करना चाहिए, तैयार करना है। और वो करने से वो क्या कर सकते हैं? नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। और मैं आपको बोलता हूं, ये तो जो दो बच्चे हैं यहां, आपके हाथ में जो मोबाइल जो आप रहते हैं दिन रात, वो सही बात नहीं है। मोबाइल दिमाग खत्म कर देता है, आंखें तो बीमार कर देता है, और सोच भी बंद करता है। और जब मैं MA PhD जो कुछ करता था, कुछ एक लिखने के लिए, एक आर्टिकल लिखने के लिए, रिसर्च पेपर करने के लिए, मैं 10-10 अलमारियां खुद के किताबें निकाल के पढ़ता था। लेकिन आज आप क्या करते हैं? एक ही बटन दबा के वो पूरा नॉलेज अपने मोबाइल लाते हैं। लेकिन वो सही नहीं है, वो सही नहीं होता है। और वो सही है या नहीं है, ये जानने को भी आपको मालूम नहीं है, उतना भी ज्ञान नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? आपको इतना करना है कि बचपन में आप मोबाइल पे सब कुछ करिए, क्योंकि नॉलेज उसमें पड़ा हुआ है सब कुछ। फिर भी अगर आपकी आंखें अच्छी रखने चाहते हैं, आपका दिमाग, हाँ, एक और ऐसा करना है, तो आपको क्या करना है? बाल साहित्य की निर्माण है। गोवा में हम प्रयोग कर रहे हैं, 4 लेवल पे हम किताबें निर्माण कर रहे हैं। लेवल 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। पहले कलरफुल, 2-2 एक शब्द की कहानी, इस प्रकार के, और चलता रहता है। हम अगले 20 सालों के देखते हैं। आज जो पैदा हुआ जो बच्चा है, जो 2-3 साल का है, वो 15-20 साल के बाद जब होगा तो वो एक अच्छा वाचक होगा। और मेरा जैसा कोई लिखता है, अगर वाचक ही नहीं है, पढ़ने वाला ही नहीं, मैं किसके लिए लिखूं? तो हमारी वो भी एक जिम्मेदारी है। हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, इसलिए हम लिखते हैं। आगे एक सवाल। Thank you, Dilip ji. You know, the full name is Dilip Borkar. I thought he will bore us, but he entertained us. So we will have some questions. I think we will take a few questions from the audience if they are interested. Anybody can ask a question either to me or to Dilip ji. We will be happy to answer the questions. कोंकणी में लिखता हूँ, देवनागरी। मुझे अवार्ड मिला है वो कोंकणी का, बाल साहित्य का, और ट्रैवलर को बड़ा। ये अमोल पालेकर जी के बंधु है दिलीप जी। अभी मिले मुझे। हाँ, बोलिए। दिलीप जी सेठ। Mode of reading habit actually. So this is a सवाल है ये आज का, कैसा बुक्स देना है चिल्ड्रन को? No, I will tell you simple. पेरेंट्स जो है,
दे मस्ट रीड फर्स्ट. और उन्हें पढ़ते हुए जब देखेंगे बच्चे अपने आप पढ़ पाएंगे. तो वही उसका सॉल्यूशन है. अदरवाइज देयर इज नो अदर सॉल्यूशन. लेकिन माँ बाप पढ़ते ही नहीं है. हर एक क्या करता है, टीवी के सामने बैठा रहता है और क्या देखता है, वो सीरियल देखता है जो सोते समय कोई औरत और पिताजी कपड़े निकालते नहीं, सूट में सोते हैं, सूट में खाते हैं, सूट इस प्रकार के. तो आपके पेरेंट्स के पास एक किताब होनी चाहिए, वो बच्चे को देना चाहिए. पढ़ने के बाद उनको देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कब सीखते हैं, जब माँ बाप जो कुछ करते हैं वही बच्चे सीखते हैं. वही वही तो है. हाँ बता. No, I have an answer to this. I am not against actually mobiles, because mobiles have taken the form of books. You know, there are several apps and you can download hundreds of books. The thing is, the life of these books, say Gutenberg, when this printing press started, it is hardly 500 years. Books are only 500 years old. They will go. We will have to depend upon the screens. Digitalization is a must. You must look at the screens, Dilipji, but there must be control. It is the responsibility of the government to have a quality check. What we should see, what we should not see. What our children should, in the cars they have child lock. And in the movies they write from this age to this age. Why there cannot be a control? It is the responsibility of the government to develop a control system for children. Our children should not see these and these things. I am very astonished. Even if I look at something, say, religious, obscene things are coming out. How come? And when a child sees, he does not know the world. He is curious, he or she. When these things are coming in the mobile, naturally she will be diverted or he will be diverted. It is our responsibility. We will have to see that. Because I tell you, all the books are not also to be read. There are also bad books. That is why Bacon said there are some books which are not to be read at all. Some books are to be read in parts, some are to be chewed and digested, some are to be read and reread. There are also statements about books. Another thing actually I forgot to tell the audience, now the times are changing. Some time back I came across a small song by Caesar Rai. माँ मुझे सुनाओ एक कहानी जहाँ न होंगी राजा न होंगी रानी. न होगा राजा, होगा होगा ना, न होगा राजा न होंगी रानी. Now the children, they want something more. The world is changing. They must know. That is one thing. And the second is, as we were telling about this Konkani language, Finland, this Nokia is their make. Finland for a long period lost its own Finnish language. Because Russia would invade and they will rule over several decades. Then Sweden will invade Finland, they will rule over several decades. So either these children, Finnish children, will learn Russia or they will learn Swedish. Their language was gone. But there, I don't remember the doctor's name, he started, as you started and said, he, through children's literature and folk literature, unified Finland, and that is how Finnish nationalism, patriotism developed. My entire emphasis is because the topic is diversity and representation. How we are going to represent our diverse India to our children. That is the focus. So my point is again, we are more focusing on adult literature. Even today we feel that. This also gathering makes us feel that. Let us be conscious that if we are not giving adequate attention to children's literature and are not doing enough for children, we can't in future link our children to the problems of India, to the future of India, to the whole of India. That is my only prayer. Any questions, sir?
Anybody? Yeah. सर जैसे हमारे यहाँ दो छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की है और ये 8 साल की, तो इनके मम्मी पापा बहुत वर्किंग है, तो हाँ उनके पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो बैठ कर बुक रीड करे, बट स्टिल जो छोटी है वो खुद ही पढ़ती है, और एक को है कि जिसको पढ़ाइए तो पढ़ेगी, नहीं तो बुक्स या फिर जो स्टोरी होती है वो इसे पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, तो कैसे मतलब पेरेंट्स तो नहीं रीड कर रहे बट फिर भी एक बच्चा घर में खुद ही पढ़ने में उसको इंटरेस्ट है और एक को मतलब इनहेरेंट इंटरेस्ट नहीं ऐसा दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसका? No, I will give you one example. My grandson was there in US. So all the time, please sit down. Yes. All the time he was glued to the TV. But afterwards I found that he is learning. One day he spoke about midnight animals in the ocean. Nobody had the knowledge. How in the ocean there are places where no light filters in. And there are also animals, they have different behavior. This child of 7 years, 6 years, he has got that knowledge. So there is, this TV screen is not idiot, that is not idiot box. If you put idiotic things into that, it will become idiot. That is a medium. That is why I told about the control of things. And another aspect is, now that grandson of mine, he is sitting in the dining space and reading books and is eating. I was astonished. He has learned from the TV, because father and mother, do not have actually in the modern times, they don't have time to teach children. But children learn. And finally I tell you, I think in 1983, Bashevis Singer got Nobel Prize. And in his Nobel speech, he emphasized on children's literature. He said, I write for children because it is only children who believe in everything. If I say that beyond this wall there is a tiger, nobody will believe me, that child will believe, might be, there is a tiger outside. So therefore, we have great opportunity to develop our children. We can give them a lot of imagination. Even if India is not one today, it can be unified in future if we make our children warriors of integration. And that is only possible through children's literature. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बहुत मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत आनंद आया होगा। ये विषय ही ऐसा था और हमारे बीच में इतने विद्वान दो वक्ता थे जो सिर्फ लिखते ही नहीं, जो सामाजिक रूप से भी वो काम एक एक्टिविस्ट की तरह भी कर रहे हैं। दिलीप बोरकर जी जैसे लोग, दास बेनिहुर जी जैसे लोग, मैं साहित्य अकादमी की ओर से दोनों ही आमंत्रित वक्ताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके प्रति। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना और जिस संख्या में आप सब बैठे हैं देख के अच्छा लग रहा है। अगले सत्र में भी आप इसी तरह रहें। अगला सत्र हमारा रचना पाठ का है और उसमें हम अपने रचनाकारों को अब आमंत्रित करेंगे। एक ग्रुप फोटो के लिए मैं निवेदन करता हूं कि कृपया सर एक पहले आपके साथ हो जाए। हाँ